So welcome students. इस क्वेश्चन में दिया है रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड मॉड z इज इक्वल टू 2. सो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए कितना z आपको मिल सकता है, दैट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ z satisfying mod z is equal to 2 and real part of z square is equal to 0. सो इसको अलग अलग मेथड से करेंगे. सो द फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिटिकल मेथड. ठीक है, फर्स्ट मेथड. सो इसमें क्या करता हूँ, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई लेता हूँ. लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. सो नाउ व्हाट आर द कंडीशंस हियर? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू 4, क्योंकि मॉड z का मतलब है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2. सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 होना चाहिए. एंड द सेकंड कंडीशन इज रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट z स्क्वायर करता हूँ. z स्क्वायर इज x प्लस आई वाई होल स्क्वायर, दैट्स नथिंग बट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy प्लस 2ixy. एंड द रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो ये 0 होना चाहिए. दिस इंप्लाइज x स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू वाई स्क्वायर. x square has to be equal to y square, and x square plus y square is equal to 4. So combining the equation 1 and equation 2, you get 2x square is equal to 4, x square is equal to 2. So x is equal to plus or minus root 2. And if you substitute x is equal to plus or minus root 2, y should also be equal to plus or minus root 2. So x is plus or minus root 2 and y is plus or minus root 2. So what are the possible values of z? So z can be equal to root 2 plus root 2i, root 2 minus root 2i, minus root 2 plus root 2i, minus root 2 minus root 2i. So you have 4 different solutions to this equation. So the answer should be option A. So this is a very straightforward algebraic method जिसमें आप z को x plus i y लिया. ठीक है. Next, let us see one more method for this. So what I do here is second method में mod z is equal to 2. So z को मैं 2 times e power I theta assume कर सकता हूँ. Z can be assumed as mod z is 2, so r into e power I theta assume कर सकता हूँ. So z square क्या होगा? Z square is 4 times e power I 2 theta. That's nothing but 4 times cos 2 theta plus I sin 2 theta. And according to the given question, z square का real part 0 होना चाहिए. This implies 4 cos 2 theta is equal to 0. This implies cos 2 theta is equal to 0. This implies 2 theta is equal to 2n pi plus minus 0 के लिए pi by 2. And theta is equal to n pi plus minus pi by 4. Okay, so these are the possible values of argument. So argument का positioning कहाँ हो सकता है? If you draw the quadrant diagram, so plus or minus pi by 4 यहाँ हो सकता है argument, यहाँ हो सकते हैं. So the argument can be plus pi by 4 or minus pi by 4 or pi plus or minus pi by 4. So pi plus pi by 4, pi minus pi by 4. So argument आपको mod has to be 2, but there are 4 values of arguments which are possible. Plus root 2, plus pi by 4, minus pi by 4, plus 3 pi by 4 and minus 3 pi by 4. So 4 arguments के लिए 4 complex numbers आएगा. So you have 4 different complex numbers which are possible. ठीक. अगर एक और मेथड से करना है तो if you want to do it by still other method, आप mod z is equal to 2, so mod z का whole square जो है वो 4 हो जाएगा. This implies modulus of z square is equal to 4 and real part of z square is equal to 0. That means z square is purely imaginary. Mod 4, so z square जो है purely imaginary and modulus is 4, so z square has to be either 4i or minus 4i. So z square can be equal to plus 4i or minus 4i. So this implies z is equal to 2 root I or minus
सॉरी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आई। सो रूट आई के लिए आपको 2 वैल्यूज आएगा, सो जेड के लिए यू हैव 2 डिफरेंट वैल्यूज। रूट माइनस आई के लिए यू हैव 2 डिफरेंट नंबर्स, सो 2 रूट आई के लिए यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ जेड, 2 रूट माइनस आई के लिए यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ जेड। So you have a total of 4 possible values of z. Thank you.